Good afternoon, everyone. Is my voice audible? Please give a thumbs up. Can you hear me, guys? If you can hear me, okay, thank you. Check whether the screen is, a page screen is visible to you or not. Clear? Let's start. Thank you. So our topic for today is time, speed, and distance. Our topic for today is time, speed, and distance. Okay, and let's continue this. See, time, speed, and distance, what we are going to study in it. The first thing is normal problems. The second thing is complex problems. Then the third is your trains. The fourth is your boats and streams. Fifth is your race. Race, and that is two divided into two. One is your linear, and the second is your circular. Is it clear? Is it clear, guys? Okay, so let's start. Now see, please. There is only one formula. Distance is equal to speed into time. Now, we can use this formula when we write about speed, it is distance upon time, and when we write about time, it is distance upon speed. Understand one more thing is when distance is taken constant, when distance is taken constant, the relationship between speed and time, the relationship between speed and time, I am assuming distance as 100 kilometers. Now let's see what happens. And let's see what happens. ध्यान से देखिएगा. If my speed is 100 km per hour, what is the time I will take to cover this? It will be 1 hour. If my speed is
50 kilometer per hour, my time taken will be 2 hours, isn't it? Suppose my speed is 25 kilometer per hour, my time will be 4 hours. To cover this 100 kilometers, my time will be 4 hours. If my speed is 20 kilometer per hour, my time will be 5 hours. Suppose my speed is 10 kilometer per hour, my time is 10 hours. Now, see here, if one of the unit is decreasing, yes, suppose I say it like this, if the speed is decreasing, my time is increasing. My time is increasing. Okay. Now understand one more thing. Here, if we multiply 100 into 1, it gives me my constant. 50 into 2, it gives me my constant. 25 into 4, it gives me my constant. Is it clear, guys? The constant is always given here. If you multiply, okay. Now understand one more thing. Okay. Now, same thing, if speed is taken as constant, let me take the speed as constant. If a speed is constant, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 60 किलोमीटर पर आवर. लेट्स टेक रिलेशनशिप क्या होगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में यहाँ पे. तो देखें यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के बीच में, अगर मैं टाइम 1 घंटे का लेता हूँ तो मेरी डिस्टेंस कितनी होगी 60 किलोमीटर. सिमिलरली अगर मैं 2 घंटे लेता हूँ तो मेरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 120. अगर मेरा 3 किलोमीटर 3 आवर्स में लेता हूँ तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 180 किलोमीटर. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखें आप इस तरफ और आप यहाँ पे देखें, इसमें आपका एक यूनिट घट रहा है तो दूसरा यूनिट बढ़ रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है एक यूनिट बढ़ रहा है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है. ये कब होता है? तो दिस हैपेंस व्हेन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एंड दिस हैपेंस कि एक यूनिट बढ़ रहा है दूसरा यूनिट भी बढ़ रहा है व्हेन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आर यू गेटिंग इट? ये आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इससे जो है आप देखेंगे तो हम जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं इस रिलेशनशिप को यूज करके. सो आई गेव यू दिस जस्ट ओनली टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. ओके. उसी तरह से हम यहाँ पे टाइम को कांस्टेंट रख के देख लेते हैं. जब हमारा टाइम कांस्टेंट रहेगा, जब हमारा टाइम कांस्टेंट रहेगा तो डिस्टेंस और स्पीड, टाइम को कांस्टेंट रख लीजिए 1 आवर, लेट्स अज्यूम डिस्टेंस और स्पीड के बीच में अगर स्पीड आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की है तो आपकी डिस्टेंस 60 किलोमीटर की होगी. स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर की है तो आपकी डिस्टेंस 50 किलोमीटर की होगी. इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की है तो 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर पहुंचोगे.
Isn't it guys? अब यहाँ पे देखिए आप, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो वो बाद में देखेंगे, पहले हम आगे का और कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ सिंपल, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। क्वेश्चन में आपका जो यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इफ डिस्टेंस इज गिवन इनटू किलोमीटर्स, आपकी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, और आपका जो टाइम है वो आवर्स में होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में है, तो आपका डिस्टेंस मीटर्स में होना चाहिए, और आपका टाइम जो है सेकंड्स में होना चाहिए। वी नो दिस, वी ऑल्सो नो 1 kilometer is equal to 1000 meters, and 1 hour is equal to 60 minutes, और 1 minute is equal to 60 seconds. So 1 hour अगर हम देखें तो this is 3600 और 3600 seconds. तो इस चीज को आप ध्यान में रखें, और हम लोगों के ध्यान में रहता भी है हमेशा, तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट. नाउ सी, यहाँ पे ध्यान दें, सपोज एक स्पीड दी हुई है कार की, लेट्स से 72 किलोमीटर पर आवर की. मुझे ये कन्वर्ट करनी है इसमें मीटर पर सेकंड. मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किलोमीटर को, 72 किलोमीटर मीन्स 72 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय पर आवर मीन्स एक घंटे में 3600 सेकंड्स. ये जीरो से ये जीरो कैंसल, ये जीरो से ये जीरो कैंसल. यहाँ पे 76 से ये 2 टाइम्स, what it gave me is 20 मीटर पर सेकंड. आप अब ध्यान से रखें, यहाँ पे ध्यान एक चीज का रखें, और वो ये है, इसका एक शॉर्टकट जो है वो है 72 किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 से, ये 5/18 कैसे आया, तो ये आपका आया 1000 बाई 3600. दिस इज नथिंग बट 10/36. 2 से कैंसिल कीजिए, 5/18. 5/18 से आप कीजिए, 18 से ये आपका हो जाएगा 4, 4 5 सब, and that gave you 20 meter per second. Is it clear now, everyone? Okay. Now please ध्यान से देखिए. Simple questions we will start with. We will start with simple questions. सबसे पहले वो देखेंगे. इस पे ध्यान दीजिए. So our first question says, let me take, a car can travel 360 kilometers with 3/4 full tank. How many kilometers can it cover with a 2/3
फुल टैंक। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कार 360 किलोमीटर्स 360 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है जब टैंक 3/4 हो, और जब 2/3 होगी तो कितना ट्रैवल करेगा? एंड व्हाट यू कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 360 into 2/3 divided by 4/3, जब ये ऊपर जाएगा तो it will become 360 into 2/3 into 3/4, and that is 3 and 3 will get cancelled. Okay, and it will be 1. Is it correct? Is it correct? जैसे परसेंटेज में हम लोग करते थे, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 360 ये क्या है आपका कैपेसिटी ऑफ द टैंक। 75% कैपेसिटी में 360 जाता है, तो दिस 2/3 is what? 66, isn't it? हेलो, तो यहाँ आपका जो होगा when you do this, sorry, I wrote it in the wrong. It is 3/4, and when you multiply, it will become 4/3. Sorry, 1 minute. So 360 into 2 into 4/3 into 9. This will give you a 40, and sorry, this gives you a 320. Extremely sorry, I wrote it wrong. So questions are easy. यहाँ पे जैसे परसेंटेज के लिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो, उसी तरह से आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। Okay, sorry for the mistake. Go with the next question. Let's move ahead. The question says, excluding stoppages, the average speed of a bus is 54 kilometer per hour. Is 54 kilometer per hour, and including stoppages, it is 45 kilometer per hour. For how many minutes does the bus stop in 1 hour? For how many minutes does the bus stop in 1 hour? ध्यान से देखिए, बस अगर स्टॉप नहीं करे तो कितने किलोमीटर से जाएगी? 54, isn't it? लेकिन जब वो स्टॉप करती है, स्टॉपेज लेती है, तो कितना जाएगी? 45। डिफरेंस दोनों के बीच में कितने का है? 9 किलोमीटर्स का, isn't it? Now 9 किलोमीटर्स अगर हम देखें 54 की स्पीड से,
कितने टाइम में कवर करता? तो 9/54 इज 1/10, ठीक है, 1/6, 9 6 जा 50। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/6 ऑफ एन आवर क्या हुआ? स्टॉप किया बस। 1/6 of an hour. Now 1/6 of an hour means 1/6 into 60, and that is 10 minutes. Is it clear, guys? Hello? Is it clear, people? Let's move on. A man walks from his office to house and returns. He starts from his home at 8:15 a.m. and reaches his office at 9 a.m. If he walks at 6 kilometers per hour, he reaches the office 15 minutes earlier. कह रहा है find his usual speed. Find his usual speed. Now, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में इसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। A man walks from his office. A man walks from his office to house and returns back. He starts from his home at 8:15 and reaches his office at 9. 8:15 में शुरू करता है और ऑफिस 9 बजे पहुंचता है। If he walks at 6 km per hour, he reaches his office 15 minutes earlier. So find his usual speed. ध्यान से देखेंगे, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो कितना लेता है? 15 मिनट्स कम, यानी वो 30 मिनट्स में पहुंच जाएगा। अभी वो 45 मिनट में पहुंच रहा है तो he will reach in 30 minutes. Isn't it? ध्यान से देखें, 6 की स्पीड से अगर 30 मिनट्स ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम जो है तो यहाँ पे 30 मिनट्स मींस हाफ एन आवर, एंड दैट मींस 3 किलोमीटर। अब ये 3 किलोमीटर उसके ऑफिस और उसके घर के बीच का डिस्टेंस है। यूजुअली ये कितने देर लेता है? 45 मिनट लेता है। 45 मिनट लेता है मींस कह सकते हैं 45 मिनट का मतलब क्या हो गया? 3/4 ऑफ एन आवर, 45 मिनट्स, 45/60 आप इसको करें, आपको 3/4 ऑफ एन आवर। अब देखिए अगेन डिस्टेंस 3 किलोमीटर,
स्पीड नहीं मालूम, लेकिन टाइम कितना लगा, तो 3/4 ऑफ एन आवर। स्पीड क्या हो गया भाई, दैट कंप्लाइज, इसको इधर भेजिए, तो 3 × 4/3 इज इक्वल टू योर स्पीड। 3 3 कैंसल, स्पीड क्या हो गया, 4 किलोमीटर पर 4 किलोमीटर पर। इज इट क्लियर गाइस? ओके, once again go with the next question and please ध्यान दीजिए। A person walking at 5/6 of his usual speed is late to his office by 40 minutes. Now, जब वो अपनी यूजुअल स्पीड का 5/6 स्पीड पकड़ता है, तो वो अपने ऑफिस के लिए 40 मिनट लेट हो जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज हिज यूजुअल ट्रैवल टाइम, यूजुअल ट्रैवल टाइम। ओके, तो व्हाट इज हिज यूजुअल ट्रैवल टाइम। अब यहाँ पे देखिए, 5/6 यूजुअल स्पीड, यानी अगेन मेरा फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मान लीजिए वो एस स्पीड से टी टाइम में डी डिस्टेंस कवर करता है। स्पीड जैसे ही उसने 5/6 किया, 5/6 एस किया, तो टाइम के लिए यहाँ पे उसको 6/5 टी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टाइम जब तक आपका रिवर्स नहीं होगा, एग्जाम्पल के लिए आप देखें, आपका ये कैंसल होगा तभी ये s × t इक्वल होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों में कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग मी? इज इट क्लियर गाइस? सो अंडरस्टैंड वन थिंग नाउ, डिफरेंस बिटवीन बोथ द टाइम्स, ये जो तो टाइम के डिफरेंस है वही आपकी 40 है। दैट मीन्स 6t/5 minus t is equal to 40 minutes. LCM लें, 560 minus 5t is equal to 40 minutes. अगर हम यहाँ पे और देखें तो ये क्या हो जाएगा, t/5 is equal to 40 minutes, और that implies t is equal to 200 minutes, और जिसको आप डिवाइड करेंगे 60 से तो आपको आएगा 3 hours 20 minutes। ये इसका यूजुअल टाइम। इज इट क्लियर गाइस? इफ इट इज क्लियर, प्लीज write it down and go with the next question. Again, let's go with a simple question. A boy walks from his home
home to school at a speed of 5 km per hour. If he walks at speed of 4 km per hour, he takes 6 more minutes. 6 more minutes. What is the distance between his home and school? What is the distance between his home and school? Okay, this is your question. Sorry. Now understand. Distance will always be fixed. Isn't it? Distance will always be fixed. If he walks at 5 km per hour, and let's assume he takes 3 hours. 5 km per hour, he takes 3 hours. And if he walks at 4 km per hour, he takes how much time? 6 more minutes. So can I say t plus 6 by 60 hours? Understand. Since the distance in both the cases is equal, so these two must always remain equal. So here 5t is equal to 4t plus 4 6 24 by 60. Let's give it 5t minus 4t, that is t, and t is equal to 24 by 60 of an hour. And that can be said as either 24 minutes or 2 by 5th of an hour. Clear? Time. Time is 2 by 5th of an hour. Now, put it in distance. D is equal to 5 into 2 by 5, and that is, what is the time? And the time is, distance 2 kilometers. The total distance is 2 kilometers. Is it clear? We have taken from here. Distance is equal to 5 into t. And I have replaced this time with t hours. Clear? Now, a boy can cover 400 meters in 2 minutes. Whereas a girl can cover 1 kilometer in 300 seconds. Question is, find the ratio of their speeds. Find the ratio of their speeds. Now understand one.
Speed, again distance by time. Here the girl's speed will be 1 kilometer by 300 and the boys will be 400 meters by 2 minutes. But again, speed should either be in meter per second. So I will convert this 2 minutes in seconds. Here we have time in seconds, but we have in kilometer. So we will convert this into meters. So speed of boy, it will be 400 by 2 minutes means 120 seconds. So 0. Let's cancel it by 4. 4 10 ja and 4 3 ja. So speed of boy is 10 by 3 meter per second. Now speed of girl, this is 1000 meters and by 300. So let's cancel it out. 0 0. We get again here as 10 by 3 meter per second. So what will be the speed ratio? 10 by 3 is to 10 by 3. Cancel. 1 is to 1. 1 is to 1. Is it clear, guys? Clear? Now, let's go with a concept. And the concept is average speed. Okay. Now, what is average speed? Suppose this is your total distance between A and B, and we take it as x kilometers. A man goes from here at 20 km per hour, reaches B and returns back at 50 km per hour. So I have to find the average speed for the entire journey. Now, average speed, what it says, average speed says total distance traveled by total time taken. Total distance traveled by total time taken. Now let's show it. What is the total distance? So it is x plus x. From A to B, the man went at 20 kilometers, x kilometers, and then from B to A, the man went with this speed 50 km per hour, and the total distance covered is x. So x plus x, total distance, time. Time, what it is? So time is always distance upon speed. So distance upon speed, and in going, the time is x upon 20, and while coming, returning, the time is x upon 20. Let's solve it. So this is 2x by 20 plus 50, 100, 25 za, so this is your 5x, 52 za, so this is your 2x. So this is 2x by 5x into 100. And x got cancelled. 5 say 20. What it will be?
his average speed will be 40 kilometer per hour. His average speed will be 40 kilometer per hour. Either you can do this, or the next what you can use is a formula. Average speed 2 into speed 1 into speed 2 divided by speed 1 plus speed 2. Now let's see this formula in action. So 2 into 20 speed into 50 speed while returning divided by 50 plus 20. 50 plus 20. Is it clear? So 5 plus 2x, sorry, this is 7x. And this will give me 200 by 7. 7 2s are 14, 660, 780, 28.5. Sorry. So again, 2 into 20 into 50 by 70. 0, 0 cancelled. So this becomes your again 200 by 7, the same equation, and it will be 28.5 kilometer per hour approx. If you can go once more, if you want to solve it, you will get as 28.5. Again, it will be near about 6 or 7. So we will leave it here. Now, the question average speed, it will always be given as a bus while covering city A to B runs at 100 km per hour while returning runs at 60 km per hour. What is the average speed of the bus? Now, I would request you use both the formulas and attempt it and write the answer in the chat box, please. Write it in the chat box. Anyone?
Now see, what you can do is, you can use the formula 2 into speed 1, that is 100, into 60 divided by 160. So 2, it will go 80. Again, a 0 will get cancelled with a 0. 4 say we have 2. 4 say we have 25. 2 say we have this 3. So 25 3s are 75 kilometer per hour. Is it clear? Thank you for answering. Chetan, Ashish. Let's move ahead, please. Car, a car. Thank you, Pankaj. A car moves at 22.5 miles, 22.5 miles in 1 hour. In 1 hour. Now, what time will it take? What time it will take to cover 60 miles? To cover 60 miles. Please write your answer for this question. Yes, anyone? Yes, please. Anyone? Now see, speed of car is 22.5 miles per hour. Distance covered, distance it has to cover is 60 miles. So distance is always equal to speed into time. So I have to find the time. What time? So time is equal to 60 divided by 22.5. You remove the decimal and here we have a 10. Now let's cancel it out. So it is 5:45 and with 5 we have 12.
So again, let's cancel it out by 3. We have 15. We have here is 4. 5. We have 2 and 5. We have 3. So it is 4 to the 8 by 3. 8 by 3 hours. Or we can say 2 by 3 hours or 2.66 hours. Whatever. Is it clear? So all the 3 options are correct. Now, whatever is given in the options, you mark it accordingly. Clear? Again, an easy question. Now, pay attention to this question. ये एक अच्छा सवाल है. Let's say an object falls 64 centimeter in 2 seconds. An object falls 64 centimeter in 2 seconds. Find how much meters it will fall in 6 seconds if height of a fall is proportional to square of the time. Square of the time. Okay. Again, please take care of this question. क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 सेकंड में अगर मान लीजिए किसी टावर से 64 एक ऑब्जेक्ट गिराया जाए तो वो 64 सेंटीमीटर गिरता है. कह रहा है कि कितना मीटर गिरेगा 6 सेकंड में अगर हाइट ऑफ फॉल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम. क्लियर? सबसे पहले आप देखें 64 सेंटीमीटर ये कितने में जा रहा है? 2 सेकंड. अगर हम इसको देखते हैं तो ये स्क्वायर ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल है ना. स्क्वायर ऑफ टाइम. इसको हम इक्वल करेंगे, क्या हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर इज इक्वल टू के इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 4. के की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? यहाँ से हो जाएगी 60. मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है के, तो के इज इक्वल टू 6. अब यहाँ पे देखें, आपको निकालना है टोटल. तो टोटल क्या हो जाएगा? के की वैल्यू है आपकी 16 इंटू 6 सेकेंड का स्क्वायर एंड दैट इज 16 इंटू 36. 16 6 जा 96 कैरी फॉरवर्ड इज 9. 16 3 जा 48 and 9 576 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगा. कितना ट्रैवल करेगा? 576 सेंटीमीटर. Is it clear, guys? Hello?
ऐसी प्लीज सपोज to travel m miles the time taken is h hours. Find the time taken to travel m miles. Find the time taken to travel m miles. यहाँ पे देखें m miles ट्रैवल करने के लिए टाइम h आवर्स लग रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा भाई? स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड इज इक्वल टू m by h. अब m माइल्स ट्रैवल करनी है, डिस्टेंस, टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी m by h, एंड दिस इज h चला जाएगा ऊपर, mh by m, mh by m hours. Is it clear, guys? Hello, everyone. Okay. एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, एंड इट इज concept of relative speed. Now what is relative speed? ध्यान से देखिए, हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड 11th और 12th में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड. ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि if a moving object it goes in this direction from x point at, let's say, 10 km per hour, and another object from x it goes at 15 km per hour. So if I take in 1 hour, in 2 hour and in 3 hours, from x डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर, 2 में 20 किलोमीटर और 3 घंटे में 30 किलोमीटर. इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर, 2 घंटे में 30 किलोमीटर और 3 घंटे में 45 किलोमीटर. Isn't it? अब आप देखें, let's say we have a body A and we have a body B. A और B अगर हम देखें तो 1 घंटे में दोनों सेम पॉइंट से चले, एक्स पॉइंट से सेम डायरेक्शन में चले, लेकिन 1 घंटे के बाद ए जो है यहीं पे रह जाएगा 10 किलोमीटर पे,
वेयर एज बी जो है वो यहाँ पे पहुंच गया 15 किलोमीटर। यानी कह सकते हैं इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड थी वो सिर्फ 5 किलोमीटर की थी। डिस्टेंस सिर्फ 5 किलोमीटर की, तो रिलेटिव स्पीड 1 घंटे में 5 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कैसे हुई? तो ये हुई इस तरह से कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, एंड दैट इज ध्यान से देखिए, 1 किलोमीटर में यानी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हुई? अगर हम देखें तो रिलेटिव स्पीड सिर्फ 15 माइनस 10 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। और ये रिलेटिव स्पीड हमें कैसे पता चला? तो सेम डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। क्लियर? सिमिलरली आप देखें, अगर ये आपका एक्स पॉइंट है, इधर से ए चला जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इस तरफ बी चला जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, एक्स से ए की डिस्टेंस जो है वो अभी भी 10 किलोमीटर पर आवर की है। एक्स से बी की जो डिस्टेंस है वो अभी भी 15 किलोमीटर पर आवर की है। लेकिन ए से बी की डिस्टेंस ये कितनी होगी? तो वो हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। ऐसा किस वजह से हुआ? तो रिलेटिव स्पीड जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन का होता है वो हमेशा ऐड होता है, यानी स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी, जो हमारा 10 प्लस 15 and that gave us 25 kilometer per hour. Is it clear now, everyone? Is it okay, guys? Did you get my point? People? Is it okay? ध्यान से देखिए, next question. Now, okay, thank you. Two cars traveling in the same direction are 15 kilometers apart from each other. One car is traveling at 50 kilometers per hour and the other at 40 kilometers per hour.
how much time will it take for both to meet each other. Now, understand this question. Let's say, if this is my point, we have here car A and we have here car B. The distance between them is 15 kilometers. Now this car will travel at 50 kilometers per hour. They are both traveling in same direction. And this car will be traveling at 40 kilometers per hour. Isn't it? Same direction. So relative speed is what? Minus. And the relative speed will become 50 minus 40. That is equal to 10 kilometers per hour. They have to meet, they have to travel how much? 15 kilometers. So what will be the time taken? T will be distance by speed. Distance is 15 kilometers and relative speed is 10. So what will be? It will be 1.5 hours. It will be 1.5 hours. Is it clear, guys? Now, understand. Suppose I take it another same example, but with a different approach. This is my car A. This is my car B. The distance between them is 15 kilometers. And this car, both are going into this direction, but this car A has 40 kilometers per hour. And car B has 50 kilometers per hour. Will they meet? No. Because with every passing hour, the distance will get on increasing. Why this will happen? Understand. Here, if this car from here to here, it travels 40 kilometers, this car will travel 50 kilometers. So from here, 40 kilometers, this distance is 40. But from here, this distance will be 50 plus 15, and that is how much? 65 kilometers. So this distance 40, the distance is, what will happen? The distance will keep on increasing between them. So car A will be here in 1 hour and car B will be here in 1 hour. So we have to always take care of the speed. Did you get my point? Is it clear, everyone? Okay. In this scenario, under this scenario, car A will never catch car B. Okay. Understand this. Go for a question, please. In covering a distance, the speeds of A and B
are in the ratio of 3:4. A takes 30 minutes more than B to reach the destination. Find the time taken by A. Find the time taken by A. Now understand. When distance is constant, speed and time are inversely proportional to each other, isn't it? So, if a speed is speed A, speed B. If a speed is in the ratio 3:4, time A is to time B will be in the ratio 4:3. Time A is to time B will be in the ratio 4:3. Isn't it, guys? Now, let's assume A takes 4x hours and B takes 3x hours. And difference between them is 30 minutes. So 4x minus 3x is equal to 30 minutes. Or x is equal to 30 minutes. Isn't it? X is equal to 30 minutes. So can I say x is equal to how much? Half an hour, 1/2 hour. So what will be 4x? Time of A, 4x is equal to 4 into 1/2, and that is 2 hours. Did you get my point? Hello guys, is it okay? Can you give a verbal confirmation? Write it in the chat box so that I can get to know whether you are getting it or not. Chat box में लिखिए please. Okay. Again एक relative speed का एक अच्छा सवाल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. ध्यान दीजिएगा. A thief steals a car at 12:32 and drives it at 60 km/h.
The theft is discovered at 1:30 p.m. and the owner sets off in same direction in another car at 75 kilometers per hour. When will he overtake the अब ध्यान से देखिए, थीफ जो है 12:30 में कार चुराया और ये थेफ्ट जो है 1:30 बजे डिस्कवर हुई, यानी 1 घंटे वो तब तक चला जा चुका है. लेट्स से यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंस स्टोर, लेकिन 1 घंटे में क्या होगा, ऑलरेडी 60 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा. थीफ अब यहाँ है और ओनर यहाँ. थीफ की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की, ओनर की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर. दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो मतलब कार से जा रहे हैं. रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 75 माइनस 60 एंड दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर. दोनों के बीच में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है. इसको कवर करने में कितना लगेगा, 60/15 एंड दैट इज 4 आवर्स. तो व्हेन विल वी ओवरटेक द थीफ, 1:30 बजे से 4 घंटे और, यानी कि एट 5:30 PM he will overtake the thief. Is it clear, everyone? Is it okay? समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ा सा भी अगर समझने में दिक्कत हो तो आप एक बार रिवाइंड करके उसको वापस से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें. Now please, let's say a man can cover a distance in 1 hour and 24 minutes by covering 2/3 of the distance at 4 kilometer per hour and the rest distance at 5 kilometer per hour. The question is, find the total distance. Find the total distance. Now, please
इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। 1 घंटे 24 मिनट लगता है उसको टोटल डिस्टेंस को कवर करने। टू थर्ड ऑफ द डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है 4 किलोमीटर पर आवर से, और रेस्ट 1/3। नाउ 2/3 और 1/3 है, तो व्हाट आई विल डू इज I will take total distance as 3x किलोमीटर, क्योंकि यहाँ 2/3 है और फिर इसका रिमेनिंग 1/3 हो जाएगा। नाउ 3x किलोमीटर्स, आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो 1 घंटा और 24 मिनट, 1 आवर प्लस 24 मिनट्स, ये आपका 24/60 मिनट्स हो जाएगा, जिसको आप 2/5 ऑफ एन आवर लिखते हो। तो 1 2/5 ऑफ एन आवर है ना, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1.4 आवर्स। 2/5 को आप करें 5 से डिवाइड करें 2 को, तो आपको मिल जाएगा 0.4। तो 1.4 आवर्स में टोटल डिस्टेंस 2x है। 2/3 ऑफ 3x, 2/3 ऑफ द डिस्टेंस वो 4 से जा रहा है, यानी कि 2/3 ऑफ 3x मीन्स 2x डिस्टेंस वो 4 किलोमीटर पर आवर है ना, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो टाइम क्या हो गया इसका, टाइम हो गया डिस्टेंस बाई c, और रिमेनिंग x वो ट्रैवल कर रहा है कितने से, 5 से, और ये जो है सो हमारा क्या होगा, टोटल टाइम 1.4, जिसको आप हटाएं तो 14/10। क्लियर। 4 और 5 एलसीएम लें, 4 और 5 का एलसीएम हमेशा 20 आता है। एलसीएम लेने का एक शॉर्टकट मेथड है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन, 5। 5 1 जा 5, 4 से डिविजिबल है नहीं। 5 2 जा 10, 4 से डिविजिबल है नहीं। 5 3 जा 15, 4 से डिविजिबल है नहीं। 5 4 जा 20, 4 से डिविजिबल है, यस, 20 आपका एलसीएम। तो 4 से ये 5 टाइम्स में जाएगा, तो 5 × 2x इज इक्वल टू 10x। 5 से ये 4 बार में जाएगा, तो 4 × x इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज 1.4, सॉरी, यानी कि 1.4 का ये 14 हो गया ना ऑलरेडी, सॉरी 14/10। ध्यान से देखें, तो 14x/20 इज इक्वल टू 14/10। इस 14 से 14 कैंसिल, इस x से x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस आपको जो है सो 3x कह रहा है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना, 3x। x की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि 6 किलोमीटर। इज इट क्लियर everyone? Is it okay guys? I am assuming you people are getting it. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज you can write it in the chat box. I will wait for a minute or two. Any problem in understanding the question, people?
एनी प्रॉब्लम गाइस? नो? चलो बहुत अच्छा. ओके, दिस शुड बी रिपीटेड. जरूर ध्यान से देखो. क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट मी change the color of the pen. Now see, a man can cover a distance in 1 hour and 24 minutes. Now 1 hour and 24 minutes, ये मिनट्स में है, मैं सबको आवर में कन्वर्ट करूंगा, जो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करा. 1 hour and 24 minutes, मिनट्स को मैंने 24 मिनट्स को 60 से डिवाइड किया, 1/2/5 यानी कि 1.4 आवर्स मेरे को मिला. ये परफेक्ट हो गया. ओके, नाउ डिस्टेंस जो है 2/3 डिस्टेंस 4 किलोमीटर से कर रहा है. तो आप देखें, जब अगर आपका डिस्टेंस 2/3 है, 2/3 मीन्स कह सकते हैं 2/3, तो 1/3 रेस्ट जो है वो कितने से कर रहा है? आप 3 के मल्टीपल में टोटल डिस्टेंस ले लें. तो मैंने डिस्टेंस 3x किलोमीटर. अब 3x का अगर मैं 2/3 करता हूँ, 3x का मैं 2/3 करता हूँ, तो ये क्या हो जाता है? 2x. 2x डिस्टेंस ये कितने की स्पीड से गया? 4 से. और 3x का अगर मैं 1/3 करता हूँ, तो ये क्या हो जाता है? x डिस्टेंस वो गया कितने से? 5 किलोमीटर पर आवर से. और ये आपका 1/1.4 हुआ. डेसिमल हटा दिया मैंने, यहाँ 10 हो गया. निश्चित तौर पे 4-5 का एलसीएम जो है सो आपका 20 हो गया. क्लियर? यहाँ पे 4 से ये 5 बार में जाएगा तो 2x इंटू 5 10x. 5 से ये 4 बार में जाएगा तो x इंटू 4 4x. यहाँ आ गया 14/10. अगेन इसका ये आपका हो गया 14x/20 इज इक्वल टू 14/10. x को इधर रखो, बाकी सबको इधर छोड़ दो. क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 14/10 इंटू 20 और बाई 14. 14 कैंसल, 10 से ये 0 से ये 0 कैंसल. x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हुई 2 आवर्स, है ना? x की वैल्यू हुई 2, सॉरी किलोमीटर्स. मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू 2 एंड दैट इज 6 किलोमीटर. इज इट क्लियर नाउ? Pankaj, is it clear? Now, let's move on. Again, a very interesting question. It is, a dog takes 4 leaps for every 5 leaps of a rabbit. यानी अगर इस स्टेटमेंट को हम सिर्फ देखें, इसका सीधे सीधे कहने का मतलब है कि डॉग जो है सो 4 लीप्स लेता है, 4 छलांग लगाता है, तो उतने ही टाइम में रैबिट जो है सो 5 छलांग लगाएगा, 5 लीप्स. क्लियर? Now the question continues. But 3 leaps of dog is equal to 4 leaps of rabbit. The question is, compare their speed. The question is, compare their speed. ध्यान से देखें.
टाइम अगर आप कांस्टेंट रखते हैं, टाइम अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो इसका मतलब डॉग का 4 लीफ है ना, और रैबिट का 5 लीफ सेम टाइम लेता है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है डॉग का 3 लीफ बराबर है रैबिट के 4 लीफ। 3 और 4 आप जानते हो, ये आपका एलसीएम जो है सो 12 होगा, यानी हम मान लेते हैं कि 12 मीटर्स। तो 3 लीफ में डॉग 12 मीटर जाता है, यानी डॉग का 1 लीफ इज इक्वल टू हाउ मच, 4 मीटर। और रैबिट का 1 लीफ विल बी इक्वल टू 12/4, दैट इज 3 मीटर। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉग जो है एक लीफ में 4 मीटर, यानी कि टी टाइम में 4 लीफ मारा तो 4 गुने 4 16 मीटर। रैबिट एक लीफ में 3 मीटर, यानी रैबिट 5 गुने 3 यानी कि 15 मीटर। ध्यान से देखिए, यह आपका डिस्टेंस का रेशियो है। नाउ व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, when time is constant, distance is directly proportional to speed। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16:50। यह आपका होगा स्पीड ऑफ डॉग इज टू स्पीड ऑफ रैबिट। स्पीड ऑफ डॉग इज टू स्पीड ऑफ रैबिट। इज इट क्लियर गाइस? हेलो। अब इसी का शॉर्टकट देखिए, किसी चीज का आप शॉर्टकट देखिए, एंड शॉर्टकट इज डॉग इज टू रैबिट, टाइम कांस्टेंट, तो ये 4 लीफ लिया, ये 5 लीफ लिया। डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो इसका 3 लीफ बराबर हो जाता है इसके 4 लीफ। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 गुने 4, डॉग का कितना हो जाएगा 16, 5 गुने 3, रैबिट का कितना हो जाएगा 15। क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पे मेरा काम चल जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। इज इट ओके पीपल? हेलो। Is it okay, everyone? Any doubt about it? चलिए, बहुत अच्छी बात। Let's continue. Let's continue.
with another question. Joker is faster than Batman. Joker and Batman each walk 24 kilometers. Sum of their speed is 7 kilometers per hour. Sum of the time taken by them is equal to 14 hours. Then Joker's speed in kilometer per hour. Then Joker's speed is in किलोमीटर पर आवर. थोड़ा ध्यान से देखिए. सबसे पहला क्या कह रहा है? जोकर इज फास्टर देन बैटमैन. तो मैं लिख सकता हूं जे ग्रेटर देन. साथ ही साथ स्पीड ऑफ जे प्लस स्पीड ऑफ बैटमैन इज इक्वल टू 7, है ना? Is it clear guys? Now थोड़ा ध्यान से देखिए. अगर मैं एक टेंटेटिव पकड़ता हूं, स्पीड ऑफ जोकर इज टू स्पीड ऑफ बैटमैन, तो टेंटेटिव क्या हो सकता है? अगर ये 6 किलोमीटर पर आवर हुआ तो ये क्या होगा? 1 किलोमीटर पर आवर. अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर हुआ तो बैटमैन क्या होगा? 2 किलोमीटर पर आवर. और ये 4 किलोमीटर पर आवर हुआ तो ये क्या होगा? 3 किलोमीटर पर आवर. Isn't it? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए. टाइम इन दोनों का सम ऑफ देयर टाइम इज 14 आवर्स. तो 24 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ जोकर प्लस 24 किलोमीटर बैटमैन गया विथ स्पीड ऑफ बैटमैन, और उसको टाइम कितना लगता है? 14. क्लियर? ध्यान से देखें. यहाँ पे आप स्पीड ऑफ जोकर और बैटमैन में से एक एक वैल्यू पुट करते हैं. यहाँ पे 6 अगर डालते हैं और यहाँ 1 डालते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा. 24, 4 और 24 28 होता है. छोटा तो नहीं होता, खत्म हो जाएगा. 5 और 2 पुट कीजिए. 5 और 2 पुट कीजिए तो यहाँ पे जो है ये 12 हो जाता है और ये 5 से जो है सो 4, है ना? 4.8. 12 और 4.8 16.8 हो जाता है. ये भी गलत हो जाएगा. 4 और 3 पुट कीजिए. देखिए 24/4 plus 24/3, this gives you 8, this gives you 6, and 6 plus 8 is nothing but it is equal to 4. तो जोकर की स्पीड आपको दिखानी है. हाँ, जोकर की स्पीड क्या हो जाएगी? बोलिए भाई. स्पीड ऑफ जोकर क्या हो जाएगी? 4 किलोमीटर.
speed of joker is 4 किलोमीटर per hour. क्लियर? एक चीज इसमें और देखिएगा, थोड़ा आप लोग अगर गौर कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देखें आपका जो है सो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे बहुत तकलीफ होगी, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, आपको फिर जो है सो यहाँ पे स्पीड ऑफ जोकर जो है वो 7 माइनस स्पीड ऑफ ये लेना होगा, या स्पीड ऑफ बैटमैन इज 7 माइनस स्पीड ऑफ जोकर लेना होगा, देन यू विल हैव टू सॉल्व इट, और वो एक अच्छा खासा प्रोसेस चला जाए। तो वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड्स इज 7 को हम रिट्रैक्ट करके देख लें, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करके। इज इट ओके गाइस? प्लीज ध्यान दीजिएगा। If a man walks at 6 kilometers per hour, he can reach his destination at 9 AM. However, he walks a little slower. And reaches at 10 AM. If distance was 12 kilometers, at what speed did he walk? At what speed did he walk? Clear? ध्यान से देखिए, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इससे इसको 2 घंटे लगा, है ना? यानी हम कह सकते हैं कि 12/6 यानी कि इसको 2 आवर्स लगा। 9 बजे डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, यानी 7 बजे 7 बजे चलना शुरू होता है, 9 बजे पहुंच जाता है। क्लियर? स्पीड क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर। नाउ यूजुअली क्या होता है, हाउएवर ही वॉक्स अ लिटिल स्लोअर, 7 बजे शुरू करता है लेकिन पहुंचता 10 घंटे में है यार, 10 बजे 3 घंटे में, सॉरी 12 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 3 घंटे में कवर किया, यानी कि 12/3 उसकी स्पीड क्या हो गई? 4 किलोमीटर पर आवर। 6 की जगह उसने 4 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल। इज इट क्लियर गाइज? हेलो? Is it okay?
Let's move to the next question. There are 21 poles with a constant distance between each pole. The car takes 30 seconds to reach the 16th pole. How long will he take to reach the last? Please everyone attempt this question. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें सभी लोग. I am giving you a minute or two. Let us see who solves it. Yes, please. Anyone? Attempt it. Okay. Pankaj 39.37 seconds. थोड़ा ध्यान दीजिए. थोड़ा ध्यान दीजिएगा. And it is let's say ये हमारा डिस्टेंस है जिसमें 21 पोल्स हैं. Let's assume 1, 2, 3, 4, 5, okay, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. ये हमारा 21 पोल्स है. इक्विडिस्टेंट हम कह सकते हैं, मान लेते हैं हम कि
50 मीटर्स डिस्टेंस है। ध्यान से देखिए, जब आप पोल 1 पे पहुंच जाओगे, यहाँ आर यू गेटिंग इट? पोल 1 पे जब आप पहुंच जाओगे तो आपका टाइम शुरू होता है, टाइम स्टार्ट्स। अब यहां से आपको 16वें पोल में, ये आपका 21, 20, 19, 17, यहाँ पहुंचने में आपको 30 सेकंड लग रहा है। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 पोल्स का डिस्टेंस कवर करने में आपको 30 सेकंड्स लग रहा है। तो आपने कवर कितना करना है? 20 पोल्स का डिस्टेंस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो एक पोल कवर करने में 2 सेकंड, तो 20 पोल कवर करने में 40 सेकंड। इज इट क्लियर पंकज? हेलो पंकज, इज इट क्लियर? हेलो, एक बार फिर से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट। पहले पोल पे आप हमेशा 0 सेकंड में पहुंचते हो, उसके बाद आप देखो कि आप कितने पोल पे पहुंचे। यहाँ से आप पहला पोल तो आप छोड़ ही दो, आपने 15वें पोल तक 30 सेकंड में कवर किया। 15 पोल्स की डिस्टेंस आपने 30 सेकंड में कवर किया। 15 पोल्स की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो आप कह सकते हो 750 मीटर की डिस्टेंस आपने 30 सेकंड में कवर की। आपकी स्पीड क्या हो गई? 25 मीटर पर सेकंड। 750/30, 25 मीटर पर सेकंड। आपने 21वां पोल, तो ये तो आप ऑलरेडी यहाँ बैठे हो, तो 20 पोल आपको कवर करनी है ना? 20 पोल्स। क्लियर है? 20 पोल्स कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? क्लियर? डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? हेलो, 1000, and that will be 40 seconds. Clear? Now, one last question for today, and then we will continue trains tomorrow. Will it be fine, everyone? One last question for today, and we will start trains tomorrow. Okay? चलिए, so एक simple सा question लेते हैं average का, and I will hope you people will be able to solve it. ठीक है? A car travels kilometer at a speed of 50 km/h. How fast must it travel on the return trip if the round trip travel time should be 55 minutes.
इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है एक कार, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। आप यहां से देखो तो टाइम निकल जाएगा आपका हाफ एन आवर, टाइम निकल आएगा आपका हाफ एन आवर। राउंड ट्रिप को टोटल 55 मिनट लगेगा, आधे घंटे तो आपने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है, यानी आपको 25 मिनट में वापसी की दूरी जो डिस्टेंस सेम होगा वो कवर करना होगा, है ना। लॉजिकली सोचें तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी। यस पीपल, आपकी लॉजिकली सोचिए तो आपकी स्पीड पर आवर क्या हो जाएगी। ये आपका 25 किलोमीटर पर आवर का है, 25 किलोमीटर का है। इधर आपकी स्पीड इधर से जाते वक्त 25 किलोमीटर पर आवर है, उधर से लौटते वक्त मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 है ना, सॉरी ये 50 है। टाइम क्या लगेगा, टोटल टाइम 55 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे 25 बाई 50 प्लस 25 बाई x एंड दिस इज इक्वल टू 55 बाई 60। देखिए मिनट्स में आपको इसको आवर में करना होगा, ये किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से देखें, दिस इज इक्वल टू 1/2। आप इसको उधर ले जाइए, 25 बाई x इज इक्वल टू 5 से कैंसिल कीजिएगा, ये 11/12 हो जाएगा। 11/12 माइनस 1/2। यहाँ पे आप देखिए, दिस विल बी 12, 11, 2 छक्के 12 माइनस 6 एंड दिस इज 25 बाई x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट विल बी, अगर आप देखें तो 25 गुणिले 12 बाई 11 माइनस 6 5 एंड दिस इज इक्वल टू x। कितना हुआ, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा गौर कीजिए आप, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 25 किलोमीटर के लिए आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधे घंटे ले लिया, हाफ एन आवर। अब इस 25 मिनट में आपको 25 किलोमीटर चलना है, तो आपकी जो स्पीड है वो क्या हुई, ये कब होगा, यह आप 25 किलोमीटर 25 मिनट, इसका सीधे सीधे मतलब 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में कितना, 60 किलोमीटर। आपका सिंपली स्पीड आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। डिड यू गेट माय पॉइंट? Okay, with this we end our transmission of going live. Join tomorrow at same 4 p.m. and we will continue with our trains chapter.